स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई भी सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है एंड इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसकी एनर्जी के हवाले से हम जानते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज होता है। यानी उन पॉइंट्स पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, और जिन पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम या ज़ीरो होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मैस स्प्रिंग सिस्टम के हवाले से मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे वी हैव अ मैस M which is attached to a spring of stiffness S. So if this system is oscillating and executing simple harmonic motion, so at its mean position where x equals 0, its kinetic energy would be maximum. But at the extreme position, its potential energy would be maximum. Similarly, at the other extreme position, its potential energy would be maximum. और अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। इस तरह का मीन पोजीशन पर अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करेंगे कि द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एक ऑसिलेशन के दौरान तमाम पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो रहा है, तो इसी चीज़ को अब हम शो करते हैं। इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, सो आई विल राइट इट, आई कैन राइट इट लाइक E टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy, or it would be equal to kinetic energy maximum, or it would be equal to potential energy maximum. यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और मीन पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और बाकी तमाम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मौजूद होंगे। और लेकिन ये जो टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। अब हम इस रिजल्ट को, इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे कि ये टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। सो वी विल फर्स्ट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी. So the potential energy can be found by summing all the small elements of the work done by the system against the restoring force over the range from x equals to 0 to x. So we can find the potential energy by summing up all the small elements of work done by the system against the restoring force. So if I will integrate the work done by small elements, then I can find the potential energy. So potential energy हम जानते हैं कि force into distance, ठीक है, and that's the work done. So if work done against the restoring force would be the potential energy. So if I will integrate this equation, so I will get half sx square.
कि अगर मैं x को इंटीग्रेट करूँगा तो x square by 2 और then I will apply here limits. So if I will apply upper limit minus lower limit, so I will get half sx square. Similarly, I can find the kinetic energy. So that's my potential energy. Similarly, I can find the kinetic energy. So kinetic energy, I know that that's half mv square. So half m, and for velocity I am writing it x dot. So half x dot square. So that's my equation 1 and it's my equation 2. If I sum equation 1 and 2, then I will get the total energy. So the total energy would be kinetic energy plus potential energy. So I will get half mx dot square plus half sx square, and I label it equation number 3. So if I will differentiate this equation number 3 with respect to time, so I will get dE by dt would be equal to, so it would be equal to d by dt, and I will write this equation half mx dot square plus half sx square. So as energy here is constant, so the differential of energy with respect to time will be equal to 0. So I can equate this equation to 0. Okay, so if I will differentiate this, so I will get अगर मैं x dot square को डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2x dot. Okay, it will be equal to 2x dot, and then I will differentiate the x dot, so it would be equal to x double dot and divided by 2 plus, again I will differentiate its x, so derivative of x square would be 2x. Okay, so it will be equal to 2sx divided by 2, and then I will also differentiate the function, so it will be equal to x dot, and which is equal to 0. ठीक है, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, and I can also take x dot here common. So I will be left with, so here I missed the m, so there will also be m here. So if I will take x dot here common, so I will be left with mx double dot plus sx, and I have taken x double dot common, so it would be equal to 0. So I will be left with mx double dot plus sx equals 0, and I can further solve this equation. So s by mx equals, so I am left with the same equation of simple harmonic motion. I know that omega square equals s by m. So I have found the same result again. So now I will find the values of potential energy maximum and kinetic energy maximum. So I know that the maximum potential energy will be at extreme positions where x equals to plus minus a. So if I will put x equals to plus minus a in the equation of the potential energy, so I will get the potential energy maximum. So that would be equal to potential energy
maximum would be equal to 1 by 2 SA square, and I will label it as equation number 4. Students, similarly we can find the value of the maximum kinetic energy. और maximum kinetic energy का फार्मूला हमने पहले लिखा था, that half mx dot square. So kinetic energy maximum would be 1 by 2 mx dot square. So I can put here the value of the x dot. I know that x equals a sine omega t plus phi, and if I will take the differential of this, so that would be my x dot. So x dot would be a omega cos of omega t plus phi. So I will put the value of the x dot in this equation. So kinetic energy maximum would be 1 by 2 m x dot would be a omega cos of omega t plus phi. As x dot is here square, so I also need to take square. So a square omega square, and I will also take the square of this cos function. Okay, so I will be left with, so I will also use here another relation. I know that omega square equals s by m, and from this relation I can find the value of s. That would be equal to m omega square. So in this relation, instead of m omega square, I will use the value s here. Okay, so I will use here s equals to m omega square in this equation. So I will be left with s a square cos square omega t plus phi. So as I have to find the maximum value of the kinetic energy, so I will use the maximum value of the cos here. So I know that the maximum value of the cos is plus 1, or it oscillates between plus 1 and negative 1. So, and there is also square on this cos function. So the maximum value of this bracket would be unity. So if I will use this unity, so I can omit this here, so I will be left with half SA square. So I found the maximum kinetic energy as half SA square, and I can label it as equation number 5. हमने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के लिए रिलेशन फाइंड किया, डेट वाज हाफ एस ए स्क्वायर. इस तरह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी हमारे पास सेम रिजल्ट आया, हाफ एस ए स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट एक्सट्रीम पोजीशंस, और हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू भी एक्सट्रीम पोजीशन पे यही होगी. और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, और जैसे कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू भी 0 होगी. अच्छा, इन तमाम पॉइंट्स के लिए एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशंस के अलावा जो हमारे पास जो ये टोटल एनर्जी होगी, वो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम अप करके हासिल कर सकते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट दैट्स half mv square, so half m x dot square plus potential energy as we found earlier equals to half s x square.
Okay, so now we will put the values of x and x dot here. Okay, so we know that half m, we know that x, as we have write earlier, that x equals to a sine omega t plus phi and x dot equals to a omega cos of omega t plus phi. And I also need to take the square of these values, so I will take the square of x dot, so I will get a square omega square cos square of omega t plus phi plus half s, and x I know that a sine omega t plus phi. So I also need to take the square of this, so a square sine square omega t plus phi. I found earlier that we know that s equals to m omega square. Okay, we know the omega square equals s by m, and from here we can get the values of the s, and s equals m omega square. So we can use the values of m omega square here. So I can get, so instead of m omega square I will use the s. So it will be s a square cos square omega t plus phi plus 1 by 2 s a square sine square omega t plus phi. Okay, so I can take 1 by 2 s a square common. So within bracket I will be left with cos square omega t plus phi plus sine square omega t plus phi. Here I can use the trigonometric identity that cos square theta plus sine square theta equals 1. तो ब्रैकेट में मेरे पास बिल्कुल यही फॉर्म बन रही है, cos square omega t plus phi plus sin square omega t plus phi equals 1. So if I will use the value, so I will get the total energy as 1 by 2 s a square, and I label it as equation number 6. So from equation 4, 5 and 6 I can conclude that equation 4 में हमने फाइंड किया था कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है हमारे पास हाफ एस ए स्क्वायर आई, और इसी तरह ये टोटल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होती है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास की वैल्यू यही होगी. इस तरह मीन पोजीशन पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है. तो सो वी गॉट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू एज हाफ एस ए स्क्वायर, एंड देन at any other point we found the total energy as half SA square. So from equation 4, 5 and 6 we can conclude that the total energy during the oscillation remains same and its value would remain as half SA square. इसी चीज़ को आपकी बुक में एक ग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन किया हुआ है. पेज नंबर 10 पे फिगर 1.4 में ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. इसमें एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस में एनर्जी को प्लॉट किया हुआ है. तो ये एक पैराबोला जो एक कर्व है वो पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को शो कर रहा है, जबकि दूसरा काइनेटिक एनर्जी की कर्व को शो कर रहा है. हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेयर एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी कर्व को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो
ज़ीरो है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। इसी तरह मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, ये वाला कर्व मैक्सिमा यहाँ पे दे रहे हैं, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। सो एंड एट ऑल अदर पॉइंट्स वी हैव values for the potential energy and kinetic energy, and if we will sum potential energy and kinetic energy, so it will give us a constant value.